Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 14, normal distribution has been discussed today. Lecture number 1. Today's lecture, I will discuss important short numericals from 1 to 5 of chapter 14, normal distribution. So students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic, important short questions from 1 to 5 of chapter 14, normal distribution. The contents of today's lectures is based on the important short questions. So one by one students we have given us first 5 important short questions को discuss करूँगा. Question number 1, then फिर question number 2 को discuss करूँगा. Question number 3, 4 and 5. Now I'm going to discuss first 5 important short questions one by one. In the statement of first important short questions, in a normal distribution, the variance is 5. Find the first 4 moments about mean. Now students, we have variance equal to 4, so we can write as sigma square equal to 4. Sigma square से denote करेंगे normal distribution के variance को. Now in a normal distribution properties, we have m1, m3 equal to 0. Odd order moments is always equal to 0 and m2 equal to variance. Second moment about mean is always equal to variance sigma square and sigma square equal to 4. तो m2 की वैल्यू जो है हमारे पास 4 होगी, m1 m3 0 है और m4 इक्वल टू 3 m2 का स्केयर. m2 मीन्स कि आपके पास m2 की जगह पे आप पुट कर सकते हैं वेरियंस सिग्मा स्केयर, m2 इक्वल टू सिग्मा स्केयर. दिस इज द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस. और सिग्मा स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 4. आपने 4 पुट कर देनी है अपने क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला के अंदर, और देन 4 का स्केयर यूज करेंगे और आपके पास जो फाइनल आंसर है 4 का स्केयर 16 मल्टीप्लाई बाय 3, m4 की वैल्यू फिर 64 होगी. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज m1, m2, m3 एंड m4. Now we have the statement of short question number 2. In a normal distribution, the mean 20 and standard deviation 5. Find mean deviation and quartile deviation. So students, we have the value of mean which is denoted by mu equal to 20 and sigma standard deviation equal to 4. Or in a normal distribution, we have the properties mean deviation equal to 0.7979 sigma. और स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो आंसर है मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 3.1916 एंड क्वार्टाइल डेविएशन हैज प्रॉपर्टी 0.6745 सिग्मा. और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे भी सिमिलरली आप यूज करेंगे 4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0.6745 से, तो आंसर इज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 2.698. So now students, using normal distribution properties, we can find the value of the mean deviation and quartile deviation of normal distribution. The statement of short question number 3 is in a normal distribution, the lower and upper quartiles are respectively 8 and 17. Find the mean and standard deviation of normal distribution. Mu और sigma की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे using the value of q1 8 and q3 17. In a normal distribution properties, we have the formula q1 equal to mu minus 0.6745 sigma. और आप लोग q1 की वैल्यू पुट कर दें 8. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. 8 equal to mu minus 0.6745 sigma and q3 equal to mu plus 0.6745 sigma. और यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे q3 की वैल्यू 17 और इक्वेशन इज 17 equal to mu plus 0.6745 of sigma. This is the equation 2. Now students, we have two equations and solve them to get the value of the mu and sigma. Now solving equation 1 and 2, first we write equation 1 8 equal to mu minus 0.6745 of sigma and equation 2 is 17 equal to mu plus 0.6745 of sigma. दोनों equations को students आपने add करना है और add करने के बाद आपके पास first ये दोनों जो left side पे values हैं 0.6745 sigma and 0.6745 of sigma नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं 8 प्लस 17 इक्वल टू 25 और म्यू प्लस म्यू इक्वल टू 2 म्यू. यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स म्यू की वैल्यू और म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12.5 और 12.5 को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 1 में और फाइंड करेंगे सिग्मा की वैल्यू को. तो नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 को राइट करें 8 इक्वल टू म्यू की वैल्यू यूज करेंगे 12.5 0.6745 सिग्मा एज इट इज और 0.6745 सिग्मा को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 8 को राइट साइड पे
और 12 माइनस 8 विच इज़ 4.5 और देन फिर 4.5 को आपने डिवाइड कर देना 0.6745 से और फाइनल आंसर जो है आपके पास आ जाएगा 6.67। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग Q1 and Q2 information. Another important short question number 4. In a normal distribution, the mean is 0 and standard deviation is 1. Write down its equation and find the value of maximum ordinate. In this question, students, we have to find the value of the maximum ordinate using normal distribution function. We have mu equal to 0 and sigma equal to 1. As we know that the equation of normal distribution is y equal to function of x equal to 1 over sigma under root 2 pi e power minus half into x minus mu over sigma का whole square with limit by negative infinity to positive infinity. Now students, first we use the mu equal to 0. mu की वैल्यू में 0 given है, इसको यूज करेंगे अपने इक्वेशन में और सिग्मा की वैल्यू 1 यूज करेंगे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर एंड वी हैव द फंक्शन. तो आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सिग्मा की वैल्यू 1 यूज करेंगे 1 ओवर रूट 2 पाई और e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू की जगह पे स्टूडेंट्स आपने पुट करनी है वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 यूज करेंगे. देन आपके पास रिमेनिंग टर्म जो रह जाएगी सिंपली एक्स स्क्वायर. तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल टर्म होगी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. The following reduced form equation is used to find the value of the maximum ordinate as y equal to function of x equal to 1 over root 2 pi e की power minus x square by 2. To find the value of maximum ordinate, put x equal to mu in the above equation. We get मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है आपके पास कैलकुलेट की जाएगी जब x की वैल्यू जो है वो आपके पास मीन के इक्वल होगी वेयर द ऑर्डिनेट इज मैक्सिमम, यानी वहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हाइट ले रहा होगा. तो नाउ वी पुट द x इक्वल टू म्यू. तो x की जगह पे आप लोग यहाँ पे पुट करते हैं म्यू को और आपके पास ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाय 2 1 over root 2 pi e की power minus mu square by 2 और we have the value of mu equal to 0. तो now students हम लोग mu की वैल्यू 0 यूज करेंगे. तो आपने अपने इक्वेशन के अंदर जो है y is a function of x 1 over root 2 pi e की power minus 0 square by 2 mu की जगह पे 0 यूज कर दिया और आपके पास यहाँ पे जो टर्म है e की पावर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू e की पावर 0 हो जाएगी और e की पावर 0 इक्वल टू 1. तो रिमेनिंग टर्म जो है 1 ओवर रूट 2 पाई डेट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट 1 ओवर रूट 2 पाई और यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हाइट ले रहा होगा ऑफ नॉर्मल कर्व का. तो आपके पास ऑर्डिनेट कब मैक्सिमम होगा व्हेन x इक्वल टू म्यू. In the statement of short question number 5, the value of second moment about mean in a normal distribution is 5. Find mu4 and mu3 for this normal distribution. Moments are also denoted by mu1, mu2, mu3 and mu4. We have the value of mu2 equal to 5. In normal distribution properties, we have mu3 equal to 0. Odd order moments are always equal to 0. And mu2 equal to sigma square. Second moment about mean is always equal to variance. And sigma square equal to 5 because mu2 equal to sigma square. तो आपके पास यहाँ पे 5 पुट कर देंगे mu2 की वैल्यू which is sigma square और then mu4 equal to 3 mu2 का square. mu2 is the second moment about mean और mu2 equal to sigma square और mu2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस में गिवन है 5 का square 25 multiplied by 3 answer is 75. That is the value of mu4. So in this way you can get the value of the mu1 mu2 mu3 and mu4 using the normal distribution properties. In this lecture, first 5 important short questions of normal distribution has been discussed. इंशाल्लाह so students आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.